नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज नए साल के दिन गुरु जी महाराज से गुरु संगत की तरफ से अरदास है कि हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखें, सदा रखे रखें, खुशियां खुशियां मिलें और सबकी हेल्थ ठीक रहे। इसी कामना के साथ गुरु संगत का मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे बीच में मोनिका मेहरा आंटी जी आई हैं जो कि संगत की करेंगी। संगत को इनिशिएट करने के लिए मैं रेणु शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रेणु शर्मा आंटी जी प्लीज सेशन को स्टार्ट कराएं। जय गुरु जी। ओवर टू यू रेणु आंटी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम रेणु आंटी। जय गुरु जी। आंटी वीडियो खोलो शुक्राना अपनी। गुरु जी, अनंतम आंटी वीडियो खोलो। आंटी मल्टीलिंगुअल परिवार वीडियो कॉल आ गई। हाँ जी आ गई। तुसी दोबारा बोलो जरा प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹੇ ਔਰ ਮਿਹਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਨਿਕਾ ਮਹਿਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲੌਦ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੂਮ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹੀ ਝੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਿਰਾ ਆਂਟੀ, ਮਹਿਰਾ ਆਂਟੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਚੂਮ ਚੂਮ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ,
गुरु जी दिखाते रहते ने हर बार कुछ नवी चीज। सो इफ आई गो बैक 2015 च सीमा सिंह आंटी अमेरिका तो और अमित राय अंकल आए सीगे साडे इत्थे, और मन समझ नहीं आया उस टाइम कि वो आए ने इंडिया, बट वो अपनी पूरी तैयारी कि असी मंदिर एक स्टार्ट कर रहे हैं, गुरु जी का मंदिर हैगा एडिसन विच, और आए हैं असी, और दिल्ली गए, गल्लां करते रहे, बड़े मंदिर होके आ रहे हैं, असी डुगरी जा रहे हैं, और साडे इत्थे बैठे कारज पेपर वर्क चलता रहता सी। सीमा सिंह आंटी वाज अ लॉयर, is a lawyer, so she would keep doing all the paperwork all the time. पर वो टाइम शायद साडा बुलावा उस टाइम नहीं सीगा। गुरु जी दा पाया होया चोला साडे घर आया, अंकल मनु कहन सूंगो देखो कितनी खुशबू हैगी, बट उस टाइम ते नहीं सी, सानू नहीं आई, असी इस लायक नहीं सी, शायद गुरु जी ने सानू उस टाइम ते एक्सेप्ट नहीं करना सीगा। मेरी बेटी दे स्टडी टेबल ते वो चोला 10 दिन जितने दिन अंकल आंटी इत्थे सीगे वो पिया रहा, पर सानू दी वैल्यू नहीं समझ आई उस टाइम ते। सो गुरु जी नाल जुड़ना इज नॉट साडे हाथ च नहीं हैगा। ਇਹ चीज मैं सुनती रहती है, बट ਇਹ समझ सानू हौली हौली आई कि गुरु जी कोल तुसी ਜਦੋਂ गुरु जी का हुक्म होएगा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, लेकिन 2 साल गुजर गए। सीमा आंटी जांदे जांदे अमेरिका वापस जांदे हुए ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਬੰਬੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ। ਤੇ लेकिन मेरी सोच घट और तरीका गलत पुछण दा, जे मैं वो नंबर ते फोन करके पूछा कि कोई ग्रुप हैगा इत्थे दा गुरु जी दा, बट अगों मनु जवाब मिलिया ग्रुप कोई नहीं हैगा। फिर गल रह गई, नहीं जान होया गुरु जी वाल। 2017 आई वेंट टू न्यू जर्सी and that was the first time मैं गुरु जी दे मंदिर गई। सीमा सिंह आंटी दे घर जदों गई बड़ा अजीब लग्या, हर जगह जेड़ी दीवार ते जिथे मुंह मोड़ो उत्थे गुरु जी दिखदे ने, और तां अजीब लगदा सी। सच्ची दसां, आई एम गोइंग टू बी वेरी ट्रूथफुल शेयरिंग माय जर्नी विद गुरु जी, कि ठीक है गुरु जी हैगे ने एक कद स्वरूप, तां ते पिक्चर कहंदे सी कि एक कद फोटो लगी हुई, ठीक है, पर पूरे घर च जिथे मुंह मोड़ो उत्थे गुरु जी, जिथे मुंह मोड़ो उत्थे गुरु जी। बट एनीवेज फिर सानू संडे दे दिन एक दिन नैक्सट डे जो असी न्यू जर्सी पहुंचे, आंटी लैके गए मंदिर, एडिसन मंदिर, एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इट वाज। वो शब्दां विच बयान नहीं किया जा सकता कि ब्लिस या आनंद जो है वो स्टेज की हुंदी है, जो सिर्फ गुरु जी दे मंदिर, गुरु जी दे सत्संग, गुरु जी दे दरबार विच बैठ के आंदी है। इट वाज सो ब्यूटिफुल दोस 2 आवर्स, बहुत ही अच्छा लग्या। और जदों सत्संग तो बाद असी बाहर निकले, अमित अंकल ने सारियां नाल मिलवाया सानू कि मेरे सिस्टर बॉम्बे तो आए ने, ते संगत जी आई मस्ट हैव मेट एट लीस्ट 60-70 संगत, and each and every one had only one thing to say: oh, is this your first time? Now you see your life changing, now you will experience miracles in your life. And I was like, wow, it's a badi vadiya jagah aa gaye si. You know, life is going to be so beautiful. I mean, 60-70 people can't be wrong, you know. So beautiful. Just went back home with a great feeling and presence of Guruji. But early next morning, I get a call from Bombay that my mother is very serious.
she's had a stroke, and then I have to rush back. And बस उतने ही I was like, यार इस तरह किस तरह हो गया? कल ते सारे मन बोल रहे सीगे कि तुम्हारी लाइफ विच उन मिरेकल्स होंगे. You see your life changing, you know. And एक ही कितना गुरुजी. There was no Guruji for me at that time, honestly. बिल्कुल कुछ belief, विश्वास, nothing. Because इत्थे मैं जा रही हूँ गुरुजी दे मंदिर, and that's what I'm praying for. Good health for my mom, you know, for, you know, happiness for the family, everything. So this was very difficult for me to take. I came back to India. By the time मैं इत्थे पहुंची, mummy had already gone into a coma. And ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹਰ ਸਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ICU ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. And within 7 days, mummy passed away. So there was no connection with Guruji at that time. I just could not believe, you know, because ek kis tarah ho sakta hai. So anyway, the journey continued. Nahi puchha, nahi gaye. After a couple of months, my uncle said, ke jalo Bombay Kandivali jehda mandir hai, let's go there. Hoke aane hai. So mandir uste kadi na nahi kar sakdi main. So we went to the mandir. And as we were sitting there, Guruji da dhyan nahi, us time kuch Guruji de bare ch pata bhi nahi si, kyunki pata bhi nahi kita. But as my eyes were closed, suddenly I get everything, you know, flashes ki kadon hoya mummy, kadon bimar hoye sige. And when I worked the time, it was exact time that I was sitting in the mandir in New Jersey where mummy nu stroke hoya ethe. India time, it was 2:30 early morning, and it was 12:32 between that time in New Jersey. So that calculation sort of started कि अच्छा उसी time होया. फिर उसके बाद I just opened my eyes and I looked up and I see Shivji. And then I'm like, it was a Monday that happened. Mummy passed away the following Monday again. And then Shivji da Roop, Shivji da Avatar again, those things just started coming. And then mummy di belief bahut sigi Shivji. Mummy te jadon chote bhi honde sige, taan bhi, balki she used to stay in Allahabad. And in Allahabad, there were a lot of these snakes and scorpions and all that bichu nikalde sige. And mummy kadi darde nahi se, hathaं ch pakad ke le aande sige, sare bolde sige ke dardi nahi hegi. And mummy used to always narrate those incidents, but she always believed in Shivji. So that whole thing just came to me while I was sitting in the mandir. And then I realized that Guruji is an avatar of Shivji. And then this one line that just came to my mind, like Guruji is telling me, "Main unhu sambhal liya." And that's when I realized what he did for mummy, because she never wanted to be on the bed. Her mother had a stroke, my nani, and she was in bed for 2 years. And so my mom was always scared कि मनु बिस्तरे ते नहीं पहनाएगा. I don't want to, you know, live with paralysis if that ever happens. So it was, you know, just suddenly all of this started coming to my mind while I was in the mandir, and Guruji manu das rahe ne. And I was like, now I get it, Guruji. So thodi belief just now start hui कि okay, this is what happens. We started going to Kandivali mandir. ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ. ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। I couldn't understand any of that. So we just started going regularly to the mandir. On 1st of October 2017, we had gone on a trip to Goa. Suddenly, at around 3:38, when I saw the clock on the side, I woke up. मेरे मुंह विच जिस तरह कुछ हार्ड हैगा, मैं बाइट किता हैगा, and I woke up suddenly and मिश्री जिस तरह मुंह विच सीगी. I just couldn't understand कि मैं तो सो रही हूं नींद विच किस तरह. And I just sat up, and then the whole dream came. What I was dreaming of. ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੇਗ ਡ੍ਰੀਮ, ਵੈਰੀ ਫਨੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ. ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰड्स ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ. एंड देन आई एम सेइंग लाइक कि नहीं नहीं, उनके लिए एक मैसेज है. सो दे सेड नहीं, आप नहीं जा सकते. एंड देन सडनली आई सी गुरुजी स्वरूप. आई सेड सी, वो गुरुजी को मानते हैं, वो गुरुजी को मानते हैं, तो ये बात सुनेंगे कि उनके लिए एक मैसेज है. तो मुझे उनको बताना है, मुझे उनको बताना है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड सडनली मेरे को पीछे से आवाज आती है, दास की कहना है. एंड आई टर्न अराउंड and I see Guruji standing. I'm like, Guruji. और मैं अच्छी खासी पंजाबी बोलनी है, बट उस टाइम जिस तरह मेरे मुंह चो पंजाबी भूल गई या की. And I'm like, Guruji, and I'm like, thank you so much, Guruji, thank you so much for blessing me, for letting me, at your feet. So he tells me, किद्दां दे? And I am so shocked, because once when I had seen Guruji's Charan Swaroop, मेरे माइंड में एक थॉट आई थी कि इतने मैले मैले पैर. मैं गल कदी किसी नाल कीती नहीं. I have never shared this with anyone. And Guruji knew, because he asked me किद्दां दे? And I said, Guruji, your lotus feet. And he said, हाँ. I just couldn't believe it. I was like in a trance. And then he's like, and I tell him, Guruji, manu अपना सिग्नेचर दो, तुसी लिख दो ना, blessings always Guruji. I want that, Guruji. So he said, ले आ दे. So I take out my diary, my clinic diary, where I give appointments. But वो diary सारे page भरे हुए ने. Every page is full. There is no space. And I'm trying to look. Even Sundays are full. And I'm wondering, when you are dreaming, subconscious mind is कदी-कदी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ. ਇਵਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ. So then he's telling me, because I can't find a place. So he said, L. And he gave me something. मैं फटाफट हाथ अगे किता कि प्रसाद देंगे गुरु जी. And what he gave me, I put it in my mouth. And that was the mishri which woke me up, because I bit on the mishri. And I stood up. Manu ta amrit vela nahi pata siga, manu kuch samajh nahi sigi. But I was just looking at the watch and I didn't know what to do. I just waited for morning so that uncle would get up. And then I started narrating the dream. I don't know what happened to me. मैं बस रोई जा रही सी. मेरा रोना बंद नहीं हो रहा सीगा. And I was narrating this. And that's when ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ dream darshan doesn't mean dream darshan. It means Guruji has come to you. He has given you real darshan. But that was the day where my belief
in Guruji skyrocketed. Because that feeling, I cannot describe what it was. It was, लोग कहंदे ना कि रब दिखदा नहीं है, ਅਸੀਂ बर्दाश्त ही नहीं कर पावांगे कदी. So, for us, इतने लूजली कह देना कि रब दिखेगा ते ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂ ਟਪਕਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੂਸ ਬੰਪ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Trust me, Guruji is there. He's there with all of us. There was no looking back after that, So, रोज दा फिर अपना शुरू हो गया सत्संग जाना. एक ऐसा जुनून सीगा गुरु जी दे बारे जो भी पता लग सके. पर उस टाइम पे ना स्वरूप आसानी नाल मिलदे सीगे, ना कोई बुक मिलदी सीगी. But I used to just go crazy looking online कि कोई भी फोटो ही मैं प्रिंट करवा लवां गुरु जी दी, मैं PDF फाइल्स डाउनलोड कर लवां, मैं गुरु जी दे बारे च पढ़ा. और वो जुनून सीगा. That craziness, I'm telling you, वो आंदी है जदों गुरु जी नाल तुसी जुड़ जांदे हैगे हो. It was just beautiful. The first satsang, but I kept, when I attended satsang, man लगदा सी यार इन्नी संगत, सत्संग करो ते संगत होनी चाहिए है ना, गुरु जी ते ताई आंदे ने. एंड आई थॉट मेरा छोटा घर है 2 BHK, किस तरह ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. सो एनीवे हिम्मत करके ऐसे नहीं सत्संग करना हैगा. सो आई टोल्ड कोऑर्डिनेटर आंटी कि आंटी 40-50 संगत तक 2 bedroom में कंफर्टेबल रहेगा. सो शी सेड ओके, we will do that. Then one of the other sevadars who came, an uncle, and he's telling me, he says, नहीं आंटी आप ऐसा करो, आप 100 प्लेटें मंगा के रखो. I was okay, मैंने तो 50 मंगाई हैं 40-50 के अंदर. He said नहीं. And you won't believe it, Sangat ji, when I was sitting in the darbar, संगत आए जा रही सी और गुरु जी मन कहते ने 10 कहती है घर छोटा है. And it was hammering, he was hammering it in my head. 10 कहती घर छोटा है, 10 कहती घर छोटा है. I was like, 97 संगत, how did we accommodate everybody? Everybody was sitting comfortably. And that's when, I was told कि गुरु जी दीवारा भी खिंच के लंबियां कर देंदे ने. संगत ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ. So it was so beautiful, that satsang that happened for the first time. ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, the vibrations in the house, the feeling of oh my God, ke Guru ji, you are here in my house. This was just unbelievable. तो ये सिलसिला गुरु जी के साथ चलता रहा. इतना शुक्राना मालिक का कि हमें इस लायक समझा कि हम गुरु जी की कुछ सेवा में लग सकें. सत्संग, सेवा, मंदिर जाना, ये सब शुरू हो गया. And then came COVID. But COVID taught me one thing, कि जिन्ने COVID टाइम विच भी नहीं मन्निया रब हैगा, गुरु जी हैगे ने, वो कदी जिंदगी समझ नहीं सकेगा. For I think barely 15 days मैं क्लिनिक बंद रखे होना अपना, जब तक WHO दी पूरी गाइडलाइंस नहीं आ गई साडे कोल. And I started work from 8th of May. 23rd March, the flights, international flights shut down, and then, everything started closing down. But 8th of May, I got back into practice, though half-day practice. But Sangat ji, वो half-day practice with me, Guru ji full-day practice करांदे सीगे. I did not feel the pinch. I did not suffer like people say. We went through our shots, we went through COVID. Guruji ने बहुत बहुत मेहर रखी हमेशा. इन्नी कृपा रही है गुरुजी की साढ़े पूरे परिवार थे. But that was a beautiful time, क्योंकि
वो पूरा 1.5 साल ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। We did Amrit Vela every single day and Sham da Satsang every single day of COVID. It was so beautiful. I think Guru Ji ne sanu time ditta apne aap naal jodan da. So, you know, once you go to a satsang, it's like you're sharpening yourself. That belief, again, every time, you know, you are building that up. So Guru Ji Maharaj ne बहुत बहुत मेहर रखी साढ़े ते। एक दिन असी सत्संग जाना सीगा to Lonavala, and we were 7-8 संगत. So we were just deciding कि किस तरह जावांगे, गड्डी किद्दी होएगी सारे, and जो आंटी normally लेके जांदे न उन्हां दी इनोवा सीगी, and she said कि नहीं मेरे तो मैकेनिक has said कि आप ये गाड़ी तो बिल्कुल हाईवे पे मत चलाना because टायर ठीक नहीं है. So I was like, नहीं चलेंगे, हम चलेंगे, हमारी गाड़ियां ले जाएंगे, दोनों गाड़ियां. And my uncle said, even our car, you should not take that unless you change the tires. And I'm like, how, you know, there's no time for it. We have to go. This was Saturday and Sunday को जाना है. ऐसे आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी, हम वहां से होके आके फिर चेंज करा लेंगे. But somehow, you know, मैं जिद पकड़ ली कि नहीं जाएंगे, हम ये गाड़ी लेके जाएंगे and करेंगे. So I was driving, stopped on the way in the market where we normally don't get parking. But that day, right opposite the shop, I got parking. I was like, wow, Guruji, gaddi te parking bhi mil gayi ithe hi market vich. Fatafat I crossed the road. As I crossed the road, suddenly there was a loud bang, you know, the sound of a tire burst. And I am looking out, सारे देख रहे हैं बाहर, normally bus da hunda hai is tarah kuch. But kuch nahi siga. So dekh ke we were back. I just picked up the stuff. As I was crossing the road and I looked, सामने I looked at my car, पीछे the tire बड़ी अजीब shape हुई सीगी. And at that time, it didn't register. I just got nearer to the car and I see कि बिल्कुल ही deformed लग रहा हैगा. I just picked up the stuff. I said, चलो गड्डी दी parking ते मिली हुई है. I'll leave the car here. I'll take an auto and go home. And I'll send somebody to pick it up. When I sat in the auto, I realized, oh my God, the tire burst was my car. And that happened in the middle of the market. Okay. It happened after I got out of the car. I was across the road and it happened. Sangatji, I was going to take this car the next morning with the Sangat for a satsang to Lonavala. But Guruji apni संगत का कितना ध्यान रख देने. He knew कि सुनेगी नहीं है कुड़ी जाएगी, and he made this happen. The tire burst happened in a stationary car. Normally you see this happening in a moving car, but the car was parked. I got out of the car. I crossed the road. Nothing. I was safe. किसी ਨੂੰ ਲੱਗੀ नहीं क्योंकि गड्डी मोशन ਵਿੱਚ नहीं सीगी. नहीं तो कोई cyclist, scooter वाला कोई भी, I could have jumped the divider because of the tire burst, and nothing happened. इस तरह तो गुरु महाराज साडा ध्यान रखते हैं. How much he loves us, how much he loves us. He has saved us so many times. And then, you know, I think the biggest satsang that I would like to share was in 2021 in September. I just felt, you know, one day examining, just generally because asi patients who dekhte hain to examine karne aaye, and I just felt कि इत्थे swelling है कि एक छोटी जी. But I just thought कि कोई infection तो है नहीं कि इत्थे हो जाए swelling. But 2-3 दिन च it became big. Like I could feel कि जिस तरह, you know, मटर दे दाने तो बादाम दा गिरी दा size हो गया आएगा. So I immediately went. I said, I need to get this checked. And so I was advised that you should do a biopsy. And I was like, okay, kuch nahi nikala, mere ko to kuch problem hai hi nahi hai. I don't have any dental problem. I don't have any ENT problem. And this area, it means it is coming from this part of the face. But I was absolutely fine. So I was not worried at all. Kuch bhi nahi niklega.
So I went, and the doctor said that this is going to be a deep surgery because the lymph node is very, very deep inside. And doing surgery would mean a lot of risk. But I was ready to take that risk because I just wanted it out of my system, whatever it was. पर एक बार गुरु जी ने क्वेश्चन किया कि गुरु जी तुसी ते वैसे ही सारे नु ठीक कर दें, तुसी ते कितने कैंसर ठीक किते ने, तुसी कितने इलाज आपे ही किते ने बिना कोई होर सर्जरी या डॉक्टर दा ट्रीटमेंट, ते मेरा भी इसी तरह ही कर दियो ना, मनु दस दे दियो कि इसी तरह करना है, या मैं मैं पुश ते नहीं कर रही अपने आप में जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर सो आई फील के आई शुड गो टू दिस डॉक्टर एंड डू इट, बट शुड आई डू इट or you will treat me? This was my question to Guruji. And Sangaji, you won't believe it. So there was an Amrit Vela. Now somehow Guruji has always given me answers during Amrit Vela. So there was an Amrit Vela Satsang. And I told Guruji in the night, ke Guruji, aaj surgery hai, to please manu answer de do. Aur agar nahi honi chahiye surgery, डॉक्टर बीमार हो जाए, ओटी कोई प्रॉब्लम हो जाए, एंड वी डोंट गो थ्रू द सर्जरी, सो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, बट टेल मी एवरीथिंग एज अ ले पर्सन, जिस तरह के मनु कुछ पता नहीं है, मनु सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज सब दसना गुरुजी, एंड यू वोंट बिलीव इट, कैन यू एवर इमेजिन कि सवेरे प्लेलिस्ट दिस अनदर अंकल हैड द सेवा ऑफ मेकिंग द प्लेलिस्ट, उस रिंकू वीर जी दा सत्संग सीगा व्याख्या वाला, and he talks about that when you are sick, when you have to go through general anesthesia and you have to go through surgery, Guruji had very clearly given me the message that you need to go through this, and I couldn't believe it कि सत्संग दी playlist विच है कितों आंसर आ सकता है इस तरह दा, केड़े सत्संग विच आएगा, and because that रिंकू वीर जी दी playlist सीगी and they were व्याख्या कर रहे सीगे, and he told me, so it was unbelievable, and I knew I had to go through it. So that was the month of October. I went through that surgery which happened here, and they removed a large lymph node. Biopsy was done, the report came after 5 days, and it was cancer. I just couldn't believe it because I had no symptoms, I had no issues, I didn't feel anything. So I didn't know what to do. Sham de time siga, pone 5 sige, and 5 baje meri seva sigi at a satsang. I just got up and walked out. I just told everybody at home, I'm going meri seva hai. And I went there and I felt all the way I felt कि मैं जिस तरह ही उनको ही संगत आएगी सामने, मनु कोई आंटी मिल जाएंगी, I'll break down, I'll start crying, कि इस तरह हो गया. But संगत जी, I tell you, मैं जिस तरह ही दरबार विच पैर रखा, I had forgotten everything. That strength that I got is only from Guruji. Everything was wiped clean. There were no emotions. I could just go in there. I did my seva. 5 बजे तो लेके ऐसी राती 11 साढ़े 11 बजे तक, क्योंकि it was in a banquet hall, so we had to wind up also. असी नच्चे टप्पे सब कुछ किया, और एक बार नहीं एक आंसू कोई गिरया होना या कोई ऐ फीलिंग कि हाय की हो गया साढ़े नाल, एंड गुरु महाराज जी ने सिखाया आएगा, and I'm so happy कि एक बार नहीं क्वेश्चन किया, गुरुजी why me? Not once. It was his strength. Trust me, that strength comes only from Guruji. Anybody listening today has to believe that he gives the strength. My daughter said nobody is going to cry in the house, and that's how my journey with Guruji with cancer began. We did not cry, but Guruji ने इस तरह रास्ते खोले साडे वास्ते.
I feel Guruji could have given me cancer anywhere else also in the body. Why did he give it to me here? Because that's my field. So I knew I could check myself. I could immediately go to the doctor. My first reaction was, I don't want treatment. I'm symptom free. Jitna bhi time likha hai Guru Maharaj, cut lamangi is tarah. I don't want treatment. So when I went to the doctor, the oncologist, and I told her, I said, Mere Guru Maharaj hai gene. So I'm coming here because my family wants me to, but I don't want treatment. And you know what she tells me? How do you know he hasn't sent you to me? I was like, for a moment when I looked at her and she's like, as if, Guruji has sent me to her. Her line, the doctor speaking like that, I just couldn't believe. And then she said, look, Monika, 75% of the cases and the patients who come to me, I know I can't do anything for them. But you are amongst the 25%. I know we can heal. Everything will be fine. And then began all the tests. So when the surgeon saw me first time, he, we did all the other tests. So this was a spread of the cancer, but we had to know where is the origin of the cancer. But all the tests were done. The doctors could not find out where is the origin, whether it's in the nose, behind the nose, in the throat, ears, everything. Kuch nahi pata laga. And then when the PET scan was done, the PET scan showed somewhere on the right side in my tonsil that there is a problem, but it was not definitive. When the doctor had a look, clinically, he examined, just by my opening my mouth, he told me the left tonsil is looking, suspicious. But I told him, I said, no, but the report says the right tonsil. He said, no, there's something wrong with the left tonsil. But anyway, he said, okay, what we need to do is now we will have to do a surgery of the tonsil. So what we will do is we will take a punch biopsy, a small biopsy. While you're on the operating table, this tissue will be sent, it will be a frozen section. Within 40 minutes, we'll get the report and we'll know which tonsil it is, left or right. So that is the procedure you need to undergo next. That was in the month of November. But Sangatji, on Diwali morning again, that was 4th of November, we had gone for another Amrit Vela Satsang. And while I was sitting, I was in Dhyan. Jina de Karsige upron, there's a huge glass shelf that just came flying out and came and hit me on my right shoulder. Everybody just thought, okay, this is the end of it. My head is going to break, Nothing happened. Everybody kept saying, Aunty, Guruji ne bacha liya thanu. Aunty, Guruji ne bacha liya thanu. Taan tak main kisi naal share nahi kita see what I was going through. But mere mind vich ek gall aayi कि Guruji ne kuch te treatment kita hai mera. Because Guruji apne time vich vi kehande si manu is tarah ਕਦੀ ਚਮਚ ਕਦੀ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ but in my mind I knew Guruji had done some form of treatment for me. What had happened at that time, Guruji had, see, the staging of the cancer changes, okay, which side it is. Because the lymph node was in this side, but my X-ray showed, the PET scan showed the right side. So the stage is bigger, cancer stage 1, 2, 3, 4. So that was a little scary, but the doctors were like, we don't know at this point because we don't know the origin. So when they did that frozen section surgery in the month of November, in the frozen section, it came negative. And then the funny thing, because ab wo negative hai, to they don't know where the cancer is.
So that means I have to go through chemotherapy, radiation, all of that, because we are dealing with an unknown origin cancer. But trust me, that surgery was supposed to be a bigger one, because when they remove the tonsil, they have to do remove all the lymph nodes also in that area. So the doctor came out and he said, I'm just removing the left tonsil because I think that is suspicious. That's it. We are not doing anything else. So I came out of the surgery, and then again the thing, कि treatment kya hoga? Chemotherapy, radiation. Then I was preparing myself for that, which was very difficult. But on the 5th day, when we went back to collect the reports and go for a follow-up, that tonsil that had been removed was positive for cancer. And this is what I feel that Guruji did. He moved it, because my PET scan showed the right side, but it ultimately came out on the left tonsil. But now the sad part, or the funny thing, was because they had not removed the lymph nodes, the doctor was like, we are happy because now we know where the cancer was. But this means you will have to undergo another surgery to remove all the lymph nodes on this side. And I was like, okay, Guruji. But trust me, Sangaji, not one day was I in pain. Guruji ne जिस तरह अपने हत्थां ते फुल्लां ते संभाल के रखा होया सीगा. Every time I went into the surgery, I came out 5th day, I was absolutely fine and back at work. I just took those 5 days of hospitalization as leave. I was working all other times. Then the 3rd surgery happened in December, where they had to remove those 22 lymph nodes they removed. And the doctor had said, even if one lymph node is positive, then you will have to undergo chemotherapy, radiation. And what a day that was, Sangaji. It was a Monday again when the report came, biopsy report. All 22 were clear. Shukrana Guruji Maharaj da. Because I somehow was not ready for chemotherapy, radiation. There was so much, the feeling of, I don't know what it is going to be. But both the times, the 2nd and the 3rd surgery, there was a butterfly sitting outside our home. My daughter took pictures and she said, Mom, look at this. We stay on the 9th floor. And there was a butterfly on the 2nd surgery and a butterfly on the 3rd surgery. But it stayed for those 5 days. And when I was back at home, we tried to pick it up, but the butterfly was dead. It just stayed in that posture. Guruji, he showed us so many times his presence, always being with me. And I'm telling you, he's always there behind me, right behind me. A lot of people said, but you went through 3 surgeries and how can you be? I said, no, Guruji ne 3 vaste karaiyan because he saved me every time. If they had done it in the first surgery, it would have been a radical treatment. They would have to remove more than, a centimeter of tissue all around. In which case, I would have lost my voice. Chances of that happening were big. I could have lost my capability of swallowing. And also a lot of disfigurement could have happened. But Guruji didn't let that happen. Apne sevak ki rakhe aap na, Guruji. He loves us so much. Guruji, I say I'm his ladli. उन्होंने ऐसे लाड लड़ाए ने because मम्मी दे जान तो बाद भी it was only in the mandir that when I would go मनु लगदा सी मैं पेके आ गई. I always say this, जो खुशी उथे जाके मिलती है, it's so beautiful. And the day that the report came where those 22 lymph nodes were negative, I said I need to do a Shukrana Satsang today. But, said instead, why don't you go to the mandir? But it was COVID time. So mandir mein restrictions bahut thi. Chai prasad to dete nahi the.
और लंगर प्रसाद भी कभी पैक्ड देते थे तो, बट व्हेन आई रीच द मंदिर, संगत जी ऐसे लाड गुरुजी ने लड़ाए, you know, all the सेवादार्स अंकल्स अंदर गुरुजी ने रूम में लेके गए, बिठा के उत्थे चाह प्रसाद पिलाई, which I could have surprisingly after the surgery. And Guruji the bhog lagya hoya langar, blessed langar, which I had after so long because the mandir was closed. So it was so beautiful, it was surreal. जिस तरह गुरुजी अपने आप ही घर बुला के अपने इतना प्यार देंदे ने. I'm sorry. I cannot thank Guruji enough. I went through a lot, which others say, but to me, it was absolutely a divine journey, bringing me closer and closer to Guruji Maharaj. Every 3 months, they would do a PET scan. That happened. Everything is going okay. He's been with me. Everything is fine. Then in August of 22, the doctor said, now we don't need to do the PET scan so often. You should do it now after a year. So I was on top of the world. Okay, Guruji, wow. It is heartening to hear that. But I don't know why I just kept getting this. I told my uncle, now tomorrow we need to do your test, because last 10 months I'm doing just, you know, everything is being me and my tests and my, you know, surgeries and everything. But you haven't got any tests done in the last whole year. There was COVID and all of this. So tomorrow morning only I'm calling the guy to come and take the blood sample. And Sangaji, in the evening, when the reports come, his serum creatinine is very high, 6.6. And we were shocked because he had no symptoms. And we were like, we immediately called up the doctor, like we do an annual checkup with the cardiologist. So we checked with him and he said, no, you come right away. And then a whole lot of battery of tests started. Everything was going on. And then, you know, once the tests were done, his kidneys were functioning only 10%. So, which was again absolutely like, you know, shattering for a day, because, you know, it was, how do we deal with this? But anyway, Guruji was, you know, there right by our side all the time. We went through, uncle went through all his tests, everything. We got ready for the dialysis that, you know, if required, we will have to go through it. During that process, in between, he had herpes. And believe me, there was no pain even once, whereas herpes is considered the most painful condition. The doctors also couldn't diagnose because he had no pain. So they couldn't figure out what it was, you know, that he had. So Guruji, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ, 90% Guruji ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. That's so true. That is so true. Uncle is on dialysis now, 2 to 3 times a week, but he goes to work every day. He goes from work for dialysis, gets it done, comes home. And I see so many people suffering over there. They have so many issues. But Guruji di mehri hai, uncle is so fit, fine. He goes, comes back, normal. Guruji ne sab sambhal liya hua hai. But Sangat ji mangya nahi kadi bhi. एक बार नहीं क्या कि गुरुजी कुछ कर दो, किडनी मिल जाए कोई, ते अंकल दा इलाज हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए. Not once. But Guruji, he shows us
So in the month of June, that is within 4-5 months of his treatment starting, we got a call that there is a, there's been an accident and this person is brain dead. So you are the same blood group match. And trust me, at that time, this happened in 4-5 months. But when I told uncle, we've got a call, let's go, he said, no, I am not ready for it. And I was like, but this is what we want. Ultimately, that is the treatment. That's the best treatment. But he was not ready for it. But I still pushed him because I said, abhi to match hoga, his compatibility test hoga, uske baad mein we'll come to know whether this works or not. So let's go to the hospital and get. So that one whole day, was a trial run for us. So at the end of it, though we did not get that kidney, but it was so beautiful because it prepared uncle for it. At that time, he was not ready, So today when we talk, and he's like, okay, if it happens now I am prepared. So, and Guruji is telling us, you are on my radar. I'm looking after you. It'll happen. ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੰਨੋ, ਟਰਸਟ ਮੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਵਿੰਗਸ ਟੂ ਫਲਾਈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। You don't have to say, speak, ask. He knows everything. He'll give you answers. And I have, been through all this so beautifully with him. Today I go about, people can't believe it, that I'm a cancer survivor. I've been to the hospital so many times, but I'm telling you, I have not had pain. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, you are fine. And Guruji has given me that strength. My whole family. Guruji Maharaj has, I just want to say that, please, believe in our faith. Trust us. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਸਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, okay. We got connected to Guruji after a big no. Like I had no faith in him at that time when Mummy passed away, because I was like, मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, the next thing I lose my mother. But today, उस टाइम वास्ते मम्मी वास्ते वो अच्छा सीगा, because she never wanted to live a life like that. So whatever happened was for the best, rather than happening ke coma ich pata nahi kitne din kat de, and वो stage नहीं आई कि ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਬਈ Guru Maharaj ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। I think Guruji knows what is best. ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। So just believe and trust in Guru Maharaj. He knows what is best for us, and he is doing the best for us. ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। Uncle, I really am at a loss to speak further. अगर आज्ञा दो, इजाजत चाहांगी। जय गुरु जी। over to you, Renu aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ।
कि तुहानू गुरु जी ने बहुत छोटी टर्म दे विच ही तुहाडी हैल्थ नू गुड किता और तुसी उन्हां ते बहुत वड्डा यकीन रखिया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 90% ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 10% ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਣ, ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਮਲੋਦੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ। ਦੱਸਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੀਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਮਲਟੀਲਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰਮ 'ਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। मोनिका मेहरा आंटी जी, आपने बड़ी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग की है आज। बहुत अच्छा लगा आपका जो संगत शेयरिंग में आपने जो अपने ब्लेसिंग बताई है गुरु महाराज की, डिवाइन स्पीचलेस। Uncle, I always say and pray कि please मंदिर आओ, आके बैठो गुरु जी दे दरबार विच। उत्थे जो मेहरां बरसदियां ने, उत्थे जेड़ा अमृत बरसदा हैगा,
really is blissful and divine that cannot be expressed in words. मैं पूजा ईसर आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं, ईसर आंटी, इफ यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ. आई थिंक पूजा आंटी मीटिंग में नहीं है शायद. आई थिंक शी इज नॉट देयर. साथ संगत जी को एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ. गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहे. इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से अभी आगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर. जय जय गुरु जी, शुक्राना. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. अनंत अनंत शुक्राना. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी, शुक्राना.